Hello, everyone. Good evening. I hope everyone is fine. Yes. How are you all? Let me on chat. Okay. So now you can send message as well. Let me record this. Okay. Good evening, Ajay. Ajay, bye. Good evening, everyone. Akhilesh, Nilesh, bye. Akhilesh, bye. Preet, Amit, everyone. Good evening. Okay. So our agenda is very clear. Today we are going to talk about we are talking about multi-cloud and we are actually understanding the differences, right? Let's say that हमारे पास तीन clouds है, AWS, Azure और Google Cloud Platform. तीनों में in all these three we have similar services, right? Similar services. One of the similar service we have is cloud networking. In the cloud networking, in Azure, in AWS, we call it AWS VPC. In Google Cloud Platform, again, we call it VPC. And for Azure, we call it VNet, right? तो हम लोगों का जो मेन एम है वो है तीनों के बीच में डिफरेंस देखना. थ्रू द माइंड मैप हमने थोड़ा सा डिफरेंस देख लिया था पार्ट 1 में. बिकॉज ऑफ द टाइम हमने लास्ट फ्राइडे को जो लाइव किया था वो हमने कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो हमने उसका पार्ट 2 डिजाइन डिफाइन किया था. तो आज ये है पार्ट नंबर 2 अबाउट गीट सॉरी अबाउट virtual networking in the cloud. Okay, so give me a second. I'm going to share mind map and हम आज ज्यादातर जो भी देखेंगे it is all about practical. Okay, give me a second. I'm going to open mind map and I'm going to share my screen as well. Meanwhile अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है आप पूछ सकते हो. Good evening, Amit. Okay, so let's share my screen. Done. Last time we discussed about uh, how the things are actually working in the cloud, right? We discuss about what is cloud virtual network. We also discuss about key features. Then we understood that how we can create VPC. Now you need to remember that when we are creating VPC in the AWS, it is different. Azure VNet is also different, and Google Cloud Platform is a way different than all these three. Okay, so एक बार फिर से हम क्या करेंगे, AWS और तीनों प्लेटफॉर्म पर लॉगिन हो जाएंगे और उसके बाद इन तीनों प्लेटफॉर्म पे हाउ वी कैन क्रिएट VPC, उस प्रोसेस को एक बार फिर से रिफर कर लेंगे. अभी मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस रनिंग है जिसके कारण आई एम नॉट एबल टू delete VPC. So let's do this. Meanwhile, I'm going to log in with the Azure as well. 1 second. Okay, तो ये मेरा Azure है, AWS, और now finally going to log into the Google Cloud Platform as well.
Okay. This is my Google Cloud Platform. हम एक साथ तीन तीन टेक्नोलॉजीज को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, पर मैं बहुत ही धीरे धीरे जाऊंगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ओके, सबसे पहले हम एज ऑलवेज बात करेंगे AWS की। AWS के अंदर अगर आपको VPC बनाना है तो आप VPC में जाओगे, इट इज वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड सर्विस, एंड यहां पे आप VPC जो है वो आपको एक डिफॉल्ट मिलता है। मेरे पास यहाँ पे एक डिफॉल्ट VPC है और मुझे अपना VPC बनाना है, तो मैं डिलीट कर दूंगा ये VPC को। यू कैन क्रिएट अप टू 5 VPC। आपको अगर इसको रखना है तो नो प्रॉब्लम, यू कैन डू दिस, बट राइट नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट one VPC only, so I want a fresh infrastructure over here. Now if you look at this, I don't have any VPC. It means I'm not able to create any resources. Okay, like EC2 instance अगर मुझे बनाना है तो नहीं बना सकता। क्यों? बिकॉज VPC के अंदर ही आप रिसोर्स बना सकते हो। अब AWS में जब आप VPC बनाओगे तो पहली चीज आपको ये याद रखनी है कि AWS के अंदर जब हम VPC बनाएंगे तब हम कोई रीजन को सिलेक्ट करके उसके अंदर VPC बनाएंगे। यानी कि सबसे पहले मुझे ये सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये जो मैं वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड बना रहा हूं वो मैं कौन से रीजन के अंदर बनाना चाहता हूं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप उसको कंपेयर करोगे दूसरे सर्विस प्रोवाइडर के साथ। ओके, तो देखिए यहां पे मेरा मुंबई रीजन है, मैंने VPC डिलीट कर दिया है मुंबई से, बट अगर मैं यहां पे जाके एन वर्जीनिया US ईस्ट में जाके देखूंगा तो मुझे वहां पे VPC मिलेगा, क्योंकि AWS के अंदर VPC service is regional. Okay, so this is like one of the problem with, like one of the difference we have with Amazon AWS. They have a system that you are creating VPC inside the region. Okay, I just deleted one VPC from Mumbai, but here I am getting this because it is a US East and Virginia region. It is not affecting US East. So whenever you are going to create any VPC, you have to select region and you are creating VPC inside the region, right? So let me click on create VPC. Here I'm going to give name my AWS VPC. Here you have to provide IP address series. I'm just going to use 192.168.0.0/24 and click on create VPC. Okay, so I just need to create this, and I have created this straight away process inside Mumbai, created VPC. Now, if I'm going to the AWS, like if I'm going to the Azure, they have the same process. They are not giving us default VNet, but when you create your first virtual machine, it will create automatically. I have this VNet over here as well. Okay, so same as I'm going to delete this from here, and I'm going to create new one inside Azure. Okay, if we talk about Azure, in Azure we can also say that this is a similarity between AWS and Azure, that you are always creating VNet inside your region, right? So here it is deleted. It is showing here, but it is actually deleted. Now let me create VNet. Okay, so same process. I'm going to create VNet. In this, we have to create everything inside any of the
resource group. I'm going to select one resource group. Here I'm giving virtual network name. Let's say that my Azure VNet. Okay. Creating this into the central India. Same process we have. When you are going to create this, you have to create this inside the region, because this is the way of AWS and Azure both. Okay. Let me click on next. Next, IP address series. This is the default one. And I'm going to create a new series. I'm going to use same series 192.168.0.0/24. And let me click on review and create. Create. Look at this. Created VNet here in the Azure as well. But if I'm going to talk about Google Cloud Platform, they have completely different scenario. I'm not saying that it is a good or bad, but they have completely different scenario. And the scenario is in this Google Cloud Platform, okay, they call it VPC. Okay, let me go to this. When you create VPC network, VPC is actually a global service. Okay. So when you, 1 second, I'm in the different account. Sorry, 1 second. Let me change my account here in the Google Cloud Platform. See, when you create VNet, okay, VPC, it is a globally created. Okay, it is globally created. Means if I'm going to delete this, let me delete this and let me recreate the new one. Okay. So if I'm going to create this, I do not need to specify that I want to create my VPC inside a specific region. It is going to create globally. Okay. It is going to create globally. And this is the main difference. See, there are many people who is saying that, if you have knowledge of one cloud, you can easily understand another cloud. I am totally agree with this. But sometimes if you have knowledge of one cloud, then if you are going to compare same knowledge with another cloud, it may confuse you as well. Okay. And that's why I'm actually taking this kind of session, so you guys can understand the whole concept. Now, right now, if you have knowledge of AWS, in the future, if you are going to learn VNet or VPC from Google Cloud Platform, it would be very easy for you if you have knowledge of all three, like we have comparison video of all three. So let me click on create VPC. See, these are the differences, right? When I created AWS VPC, I have to provide IP address range. When I created Azure VPC, I have to provide IP address range. When I created AWS VPC, I have to provide region. When I created VNet, I have to provide region as well. But look at the difference when I'm using Google Cloud Platform. Let me click on create VPC network. Okay. Here it is asking me for the name. I'm going to say that my GCP VPC. Okay. And here it is not actually asking me any IP address range. Okay. It is not asking me any IP address range, because here we do not need to provide IP address range. And another thing is we do not need to provide region as well. Okay. Because when you create this, it is going to create globally. This VPC is available for all the region. Okay. So I want you guys to type clear now till now. So just type CC. Okay. I just use capital letter, which is not allowed in GCP. So yeah. And this is what we have completed during the last class. Okay. हमने यहां तक लास्ट क्लास में बात भी की थी. ओके. अभी मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में वीपीसी नहीं बना रहा हूं, क्योंकि थोड़ा सा अलग है, तो उसके लिए मुझे आई हैव टू प्रोवाइड यू द डिटेल. ओके. सो नॉट गोइंग टू क्रिएट दिस नाउ.
Sanjay, let me tell you, as you asking me this question, let me tell you, see, what is idea? Let's say that if you are creating anything first time, right? Then you will realize that, okay, if I'm doing this second time, I can make it better. And if I'm going to create this third time, I'm able to create it more better, right? So same thing applies over here. When VPC introduced by Google Cloud Platform, okay, they have an idea about how AWS is working, how Azure is working, and they design a completely different thing. Okay, and you will realize this step by step. Okay, so I think in these three, the way Google Cloud Platform is working is different. You will get idea like how it is working, but you can find out, like, you have to decide that which one is the better and which one is convenient to you. Okay, my aim is you to understand all these three and understand this while you are learning all of this together. Suppose, let's say that in future, if you will learn AWS, Google Cloud, okay, because of this class, you would have a proper idea. Okay, so that's why I'm just telling you. Otherwise, design perspective is just that whatever the problem that people are facing in the other cloud, here you are not going to face this. Okay, now second part. According to AWS, okay, once you complete your VPC creation, let's say that I have my VPC right now. The second part we have is to set up the subnet. Okay. One second, I am going to answer one question. Yogesh is asking me, what about the payment plan for Azure and GCP? GCP, it is same like AWS. Does Azure and GCP also sustain? Give us alert? Yeah, they are actually providing us an alert. And in Google Cloud Platform, you are going to get $300 credit. You can use this within 3 months. Okay. Now, yeah, Sanjay, better result is the only reason. Now, let's go to the VPC of AWS. Right now, I am inside the AWS screen. And if you look at over here, okay, we have to create subnet. Now, we need to understand that why we are creating subnet inside AWS. Okay, this is the another important part. Okay, I have this picture that I have used during the last class. I'm going to use the same thing. Okay, so let me open this. No, not this one. See, according to AWS, okay, in each and every region, okay, this is my region. Okay, right now I'm talking about AWS. Let me add a tag over here so you guys can not confuse, right? What is AWS is saying that in each region we have VPC. Inside each region we have availability zone, right? AZ. So AZ, let's say that in India we have AP South 1. Here we have AP South 1A was there actually, AP South 1B. And here we have AP South 1C. Now, what is philosophy or the idea of AWS here? AWS is saying that when you have your VPC ready, you need to create subnet. And when you are creating subnet, you have to specify your availability zone. It means you are creating your subnet inside your availability zone. This is the philosophy of AWS. Whenever you are going to create subnet, you are always creating this subnet inside your availability zone. Okay. So what I'm doing, I'm going to create this. Okay.
Let me go to AWS, going to the subnet, create subnet. Here I am selecting my subnet. It is my AWS VPC. Here I have to say that subnet 1. Okay. And here I have to provide availability zone. I am going to provide availability zone like AP South 1A. This is my IP address of CIDR range. Now I have to use subnetting, and I'm going to use 192.168.0.0/25. Okay, subnetting, you can go to the SolarWinds subnet calculator and create subnet, but you need to decide how many subnet you need to create, and you can use IP address range series over here. And let me click on create subnets. Now, if you look at this picture, I have one subnet inside AP South 1. Because I have one subnet inside AP South 1, okay, I can create my resources inside AP South 1. I cannot create my resources inside AP South 1B because here I don't have any subnet. How I can verify this? See, I'm going to the EC2. Okay, I'm going to the EC2. Now, inside EC2, if I'm going to click on launch instance, okay, we have to specify that in which availability zone we need to create EC2 instance. I'm going to select server. Here it is Amazon Linux, T2 Micro, key pair, and here it is a networking setting. And if I'm going to click on edit, you will find out subnet 1 is visible. And this subnet 1 is actually created inside AP South 1A. So I'm getting AP South 1A, but if you look at this in the list, I'm not getting AP South 1B and C. The meaning of this is I am not able to create any EC2 instance inside AP South 1, B, and C. And if I'm not able to create EC2 instances inside AP South 1 and B, AP South 1, B, and C, the meaning is I am totally dependent on AP South 1A. Let's say that if I want to set up a redundant server, according to the AWS rule, if you want redundant server, if you want to set up high availability, you have to create another EC2 instance into the another availability zone. Now, my problem over here is I am not getting AP South 1B. And because of this, it is compulsory for me to create another subnet, right? So I have to do this. Otherwise, I'm not able to create any EC2 instances in AP South 1B. Okay, so I'm going to click on another subnet. Okay, here I'm going to use subnet 2. Here I'm going to use AP South 1B. And here I'm going to use this IP address range 192.168.0.128/25. Okay, and let me click on create subnet. I have created another subnet, and this time I have created this into the AP South 1B. And because of this, now I have this flexibility to create my EC2 instance inside both subnet. Look at this subnet 1, which is in AP South 1A, and here I have subnet 1B as well. So this is the way AWS is working. You need to create, right? You need to create a subnet inside each and every availability zone you have. Of course, you can create multiple subnet. Let's say that if you want to create multiple subnet into the same availability zone, it is also possible. But the one thing that you need to remember about AWS, and this is like your subnet cannot cross boundary of availability zone. Subnets are always inside your availability zone. This is how AWS is working. Okay. Now, another part, let's talk about Azure. In Azure, we call it VNet. So if you look at this, I have my VNet. Okay, going to the home, going to the virtual network, and you will find out this, my VNet. Now, here it is also compulsory to set up the subnet. So once you need to set up VPC, VNet, and after that you need to set up the subnet. Okay. Now, whenever I'm going to set up subnet over here inside my Azure, okay, I'm going to click on subnet.
giving name VNet subnet, right? Let's say that VNet subnet. Okay. Here, it is also asking me subnet range. I'm going to say like same. Like, look at this. I'm going to say 192.168.0/25, right? I'm going to give a same kind of range that I have used for Google, for VNet, for AWS, right? And look at this. Look at this. It is not giving me option to select availability zone. Here in VNet, we call it zone, but look at this. I'm not getting this option. There is no zone. Okay. Why there is no zone? Why there is no zone? Because when you are creating subnet inside your VNet, okay, actually, it is automatically using all these three. Okay, all these three availability zone automatically. It is automatically, whenever you create any subnet, it is going to use all the availability zone or all the zone of this particular subnet. Okay, so you do not need to create subnets in order to use availability zone. That is what we have inside the AWS, right? In AWS, if you want to use availability zone, you have to create subnet. Here, when you create one subnet, you are going to get your subnet will be created in all the three availability zone automatically. Okay. And right now, suppose if I am going to the virtual machine, okay, and if I'm going to create virtual machine, it will allow me to create virtual machine in any availability zone. Okay, so let's try this. I'm going to give name VM, okay, Central India, and here, sorry, see, zone 1, zone 2, zone 3. If I'm going to select zone 2, if I'm going to select zone 3, okay, it is allowing me because here, like AWS, okay, it is not compulsory for you to select availability zone while you are creating subnet. It is going to create your subnet in all the three availability zone. Till now, everything is clear, guys. If it is clear, type CC into the chat box. Okay, the main difference. Ajay Joshi, thank you. Achilles, yes. Super. Okay. Now, the real game changer. And the real game changer is Google Cloud Platform. Right? First of all, here they are not actually creating this particular VPC inside. Yeah, yes, that is true, Nilesh. Okay. Here it is global service. Second point here we have is we need to create subnet as well, right? So here in AWS, like Azure, we need to create subnet. सबनेट यहां भी बनाना ही पड़ेगा, पर अलग चीज क्या है, जब आप यहां पे सबनेट बनाते हो तब आप ये बोलते हो कि कौन से रीजन में आपको सबनेट बनाना है. देखिए AWS में और Azure में, in AWS and in Azure you are creating subnet inside availability zone. Here you are creating subnet inside the region. Service VPC है, it is a global, but region wise आपको subnet, you have to create the subnet. Okay, so here I'm going to say that, let's say that here I can say that India subnet. Okay, and you need to select your this region, right? So Asia South 1. Okay, and during the subnet creation, okay, you have to provide IP address range. तो सबनेट पे IP address range होगा, यहाँ पे VPC का कोई IP address range नहीं होगा. If you want to create multiple subnet inside the India, you can do this, but आप अपना IP address range जो है वो
सिलेक्ट कर लो, मैं सेम आईपी एड्रेस रेंज दे रहा हूं 192.168.0.24, बट वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ओके, Google Cloud Platform, VPC is a regional service. Now, you say, sorry, VPC is a global service. Now you say that, hey, I want to create resources in India. Okay, do one thing, find out the Indian region, it is Asia South 1, and do one thing, create subnet over there. And now, when you create this subnet, it is going to use all the three availability zone as well. Google, three availability zone, Azure 3 availability zone, AWS 3 availability zone, तीनों के पास। पर यहां पे जब ये हम बनाते हैं ना सबनेट, ये कंट्री हम स्पेसिफाई करते हैं या रीजन स्पेसिफाई करते हैं मेनली। और दूसरी बात है कि वहां पे हमें आईपी देना है जब हमने सबनेट बनाया है। ओके, तो ये है। और यहाँ पे एक फायरवॉल भी काम करता है, अभी मुझे बनाना है तो मैं अभी आईसीएमपी, आरडीपी और एसएसएच अलाउड कर देता हूं। ओके, और देखिए यहां पे मेरा वीपीसी बन गया है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो ये चीजें हैं। अब ये पूरा कंपैरिजन है, ये माइंड मैप हमारे कम्युनिटी मेंबर के पास तो डाउनलोड आप कर ही सकते हो। ओके, तो देखिए अब ये तो बन गया, वीपीसी हो चुका है, सबनेट क्रिएशन इज ऑल्सो डन। अब हम जो चीज समझने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि अलग है गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में और AWS में। ओके, तो पहले फर्स्ट we are going to start with AWS, right? I'm going to start with the AWS first. So देखिए, what is idea of AWS? First of all, what I am doing, okay, I am going to create one virtual machine inside subnet that we have created. Okay, I'm going to create one virtual machine. Now, for our convenience, I am going to create, let's say that Amazon Linux, right? Let's create a Windows, right? Let's say that Win machine, right? Windows, Amazon Linux. No. We want to create Windows, right? So Windows, going to select Windows. Here we call it AMI, Amazon Machine Image, right? I'm going to create older one, 2016, because क्या होता है ना, when we are creating this into the T2 micro, ये फ्री वाला है तो थोड़ा स्लो चलता है इसलिए। ओके, ये है कीपैड जिसके हम लॉगिन हो गए, ये है मेरा VPC, and here it is a VPC. Here we have to provide public IP. Let's assign public IP, क्योंकि पब्लिक आईपी के बिना आप उसको एक्सेस नहीं कर पाओगे। मैं अभी ये सबनेट 1 में बना रहा हूं। ओके, बाकी सब कुछ एज इट इज है। और देखिए यहाँ पे है ना, मैं ऑल ट्रैफिक भी अलाउ दे रहा हूँ, राइट? क्यों? क्योंकि हमें टेस्टिंग करना है, इसलिए मैं ऑल ट्रैफिक दे रहा हूँ, राइट? और देखिए ये विंडोज इंस्टेंस मेरा बन गया। ओके, अब एपी साउथ 1 में बनाया है और ये मेरा इंस्टेंस जो है अभी बन करके रेडी हो रहा है। अब मुझे सेम इंस्टेंस बनाना है किसमें? एज्योर में। तो देखो मैं यहां पे जा रहा हूं एज्योर में, राइट? अब होम में गया, सबसे पहले मैं जाऊंगा वर्चुअल मशीन पे। ओके, लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट एज्योर वर्चुअल मशीन। ओके, यहाँ पे मेरे पास सैटरडे रिसोर्स ग्रुप था, आई थिंक सैटरडे ही मैंने चूज किया था। वर्चुअल मशीन नेम मैं दूंगा एज्योर VM। सेंटर इंडिया अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर लिया, जोन 1। ओके, यहाँ पे लेट्स से दैट स्टैंडर्ड 2016 हमें करना है, तो यस 2016। ओके, वर्चुअल मशीन, देखिए यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड हमें देना पड़ेगा। यूजर नेम में मैं भावेश दे देता हूं क्योंकि Indian@। ओके, ये मेरा हो गया पासवर्ड। ओके, अलाउड एक्सेस। नाउ नेक्स्ट जब नेटवर्किंग में जाएंगे तो देखिए माई एज्योर VNet आ गया, VNet सबनेट भी हमें मिल गया, पब्लिक आईपी यस मुझे देना है। ओके, बेसिक सिक्योरिटी नॉर्मल है, RDP पोर्ट अलाउड है। ओके, एंड लेट मी क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन, लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा गेम। आप सिर्फ मैं वर्चुअल मशीन बना लूं तब तक देखो, उसके बाद बहुत ही मजा आने वाला है आपको।
ओके, उसके बाद वी आर गोइंग टू क्रिएट वर्चुअल मशीन इनसाइड गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म। तो अभी मैं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में हूं, यहां पे भी हम उसको बोलते हैं वर्चुअल मशीन। सो लेट्स गो टू द कंप्यूट इंजन एंड गो टू द वीएम इंस्टेंस। ओके, देखो नाम देखो, एक है EC2 इंस्टेंस, राइट, एक है EC2 इंस्टेंस, दूसरा है वर्चुअल मशीन। ओके, एंड द थर्ड वन इज वर्चुअल मशीन इंस्टेंस। ओके, तो ये पूरा नाम है, दोनों का मिक्स है। क्रिएट इंस्टेंस कहां पे बनाना है? एशिया साउथ 1, जहां पे हमारा VPC था। अवेलेबिलिटी जोन तीनों में से किसी में भी बना लो, कोई ना नहीं बोलेगा। ओके, ये है, ये यहाँ पे ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन है, और देखिए यहाँ पे इसको बोलते हैं बूट डिस्क। तो मैं चेंज करूंगा, और मुझे बनाना है विंडोज। सो यहाँ पे मैं जाऊंगा और सिलेक्ट करूंगा विंडोज। ओके, यहाँ पे विंडोज के सभी वर्जन आ गए, 2016 डेटा सेंटर एडिशन। ओके, सिलेक्ट, VPC ऑलरेडी हमारे पास है। ओके, सो लेट मी क्लिक ऑन क्रिएट। तो ये मेरा अभी जो मशीन बन रहा है वो है विंडोज मशीन, और हमने तीनों में बना लिया, राइट, तीनों के अंदर हमने बना लिया है। अभी गेम स्टार्ट होगा। ओके, सबसे पहली बात हम यहां पे जाएंगे, ये हमारा विंडोज का मशीन था। ओके, यहां पे ये पब्लिक आईपी है, ये प्राइवेट आईपी है, देख लो जो हमने सीरीज दिया था वीनेट का, उसी सीरीज का एक आईपी है। प्राइवेट आईपी ऑटोमेटिकली मिलता है और हमें देने की जरूरत नहीं है, पर जो भी आपका VPC का रेंज होगा उसमें होगा, वही चीज यहां पे है। अब मैं जा रहा हूं एज्योर में। जब आप एज्योर में जाओगे तो वहीं भी आपको सेम चीज मिलेगी। देखो, ये है हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस, और ये है हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस। जिस सीरीज में हमने सबनेट बनाया था उसी सीरीज में मुझे ये भी आईपी मिला, और ये मिला पब्लिक आईपी। अब मैं जा रहा हूं गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में, यहां पर भी हमें सेम चीज मिली, 192.168.0.2, और ये रहा हमारा पब्लिक आईपी। तो तीनों जगह पे हमें सेम स्ट्रक्चर मिला है। पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट आईपी भी है, पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट आईपी भी है, पब्लिक आईपी भी है, प्राइवेट आईपी भी है। ओके, अब मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा AWS वालों को, राइट, अगर आपको AWS का नॉलेज है उसको मैं क्वेश्चन पूछूंगा। मेरा क्वेश्चन यहां पे ये है कि क्या मैं इस पर्टिकुलर विंडोज इंस्टेंस को एक्सेस कर पाऊंगा? आई एम आस्किंग वन क्वेश्चन टू द पीपल हु इज हैविंग नॉलेज ऑफ AWS. Question is, can I able to access this Windows instance in AWS? Yes, guys. Achilles is saying no. Ajay Joshi is saying no. Yes, anybody else? I want answer from everybody. Nilesh is saying yes. Viral is saying no. Yes, yes, yes. There are many people online. Why I'm not getting reply from everybody? Yeah. Top UC saying no. Right? According to the rule, Bhavesh question is, can I able to access this Windows instance right now? Access means, can I access through the RDP? Bhavesh is saying yes. Okay. So now let me answer this question. Answer of the question is, I am not able to access this EC2 instance because, let me test this first. Then I'm going to answer this, right? Because, so let me click on connect, RDP client, downloading remote desktop file. Okay. And Windows RDP, let me click on connect. No, I am not able to access this EC2 instance. If I'm asking this question to anybody, even one person already answered this, and the person name is Achilles Mathur. Achilles already answered this, that no, you are not able to access this because internet gateway is required.
Everybody agree with me? In AWS, internet gateway is required. Viral, password is the next thing, right? You can find out the password detail from here. The default username is administrator. You can get password from here. The main requirement is if you want to use VPC and if you want to access any EC2 instance in the AWS, you have to set up internet gateway. Then you are able to access this. So the problem over here is the missing part we have is we don't have internet gateway. Yes, IG is mandatory. And because of this, I'm not able to access this, right? Clear? Everybody clear right now? Just say yes into the chat box. Yes? Yeah. Okay. Now, real game. Okay. Real game. Let's say that going to the Azure, right? I have this EC2 instance. Here, I also created one EC2 instance. I am not having any internet gateway or anything. I didn't completed anything, right? तो यहाँ पर भी मैंने कुछ कॉन्फ़िगर नहीं किया है. जैसा मैंने AWS में किया था वैसा ही मैंने यहाँ पे किया है. अब यहाँ पे मैं करूंगा कनेक्ट. ओके, डाउनलोड RDP फाइल. ओके, ये मेरा Azure VM RDP फाइल. कनेक्ट, asking me for the password जो मैंने सेटअप किया था, और आई गॉट माई इंस्टेंस. नीलेश भाई, हम ये कह सकते हैं कि एज्योर में वीनेट आईजी यानी कि इंटरनेट गेटवे जैसा कॉन्सेप्ट है ही नहीं. हाँ, कोई जरूरत ही नहीं है. आपको एक्सेस मिलेगा. और देखो ये मुझे डायरेक्टली मिल गया. डिफॉल्ट प्रोवाइडेड भी नहीं है क्योंकि यू डोंट हैव एनी परमिशन टू सी दिस. सो यहां पे इंटरनेट गेटवे ऐड करना ही नहीं है. और देखो इंटरनेट हमारा चालू हो गया. गॉट माय पॉइंट? यस. अब तीसरा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म. देखते हैं वहां पे क्या होता है, राइट? वहां पे क्या होता है. देखो गूगल क्लाउड में भी हमारा सर्वर है, राइट? यहाँ पे अब यहाँ पे थोड़ा अलग है. दो तीनों में अलग अलग चीजें हैं तो अलग है. देखो यहाँ पे क्या होता है, सेट विंडोज पासवर्ड. ओके, ये मेरा यूजर नेम रहेगा और यहाँ पे हमारे पास ये पासवर्ड है. उसको हम कॉपी कर लेंगे. यहाँ से पासवर्ड देगा, उसको हम कॉपी करके फिर उसको एक्सेस करेंगे. पहले ये देखना है कि एक्सेस होता है कि नहीं. देखो इसमें मैंने पासवर्ड कॉपी कर लिया. ओके, अब RDP करूंगा. डाउनलोड कर लिया RDP फाइल. ओके, क्या होगा? क्या होगा भाई लोग? यस और नो? गेस दिस, यस और नो? अखिलेश इज सेइंग कनेक्ट हो जाएगा. नीलेश इज सेइंग 50-50. डिप्लोमेटिक आंसर. हाँ, 50-50. सो लेट मी क्लिक ऑन कनेक्ट. यस, कनेक्ट हो गया. पासवर्ड मैंने कॉपी किया था, मैं पेस्ट कर दूं और यहां पे मेरा एक्सेस हो गया है. यानी कि AWS में और एज्योर में बहुत ही डिफरेंस है. और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म ऑलमोस्ट एज्योर जैसा है कि जहां पे आपको इंटरनेट गेटवे देने की जरूरत ही नहीं है. इंटरनेट गेटवे का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास किसमें है? AWS में है. दूसरे में ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं. हाँ, अब सोचो अगर आप AWS में एक्सपर्ट बन चुके हो, राइट? अगर आप AWS में एक्सपर्ट बन चुके हो, उसके बाद आप गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म सीखना स्टार्ट करोगे. जैसे आपने सीखना स्टार्ट किया, जैसे ही आप सीखना स्टार्ट करोगे उसके बाद आप वीनेट बनाओगे. आप वीनेट बनाओगे तो आप बोलोगे चलो VPC यानी वीनेट तो ये सही है. फिर आप ढूंढोगे इंटरनेट गेटवे कहां गया, है ही नहीं, राइट? है ही नहीं. इसीलिए इट इज गुड आइडिया दैट
इस टाइप के वीडियोस होने चाहिए जिससे लोगों को पता चलेगा, कंपैरिजन से समझाएंगे कि भाई ये डिफरेंस है। ये समझने में थोड़ा टाइम लगता है, पर एक बार आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो फिर कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं स्पेसिफिकली क्लाउड नेटवर्किंग के बारे में वीडियोस बना रहा हूं, ये क्यों? क्योंकि यहां पे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, राइट। बाकी सब में इतना डिफरेंस नहीं है, ये थोड़ा अलग वाली चीज है, इसलिए आप लोगों को काम आएगा ये सोच के ही ये हमने बनाया है, राइट। अब थोड़ी सी डिफरेंट लेवल पे जाएंगे। यहां पे तीन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स में, तीनों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, राइट। तो गूगल क्लाउड का क्या है ना, कभी वो एडब्ल्यूएस के साथ एग्री करता है, कभी वो एज्योर के साथ एग्री करता है। ओके, अभी ये जो हमने सीखा उसमें हमें ये पता चला कि भाई ये जो गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है उसका जो नेटवर्किंग का स्टाइल है कि इंटरनेट गेटवे नहीं चाहिए, वो सेम एज एज्योर जैसा हुआ, राइट। ओके, अब देखो इंटरनेट, अभी जो हमने बात की ना वो थी इनबाउंड इंटरनेट की। ओके, वो थी इनबाउंड इंटरनेट। इनबाउंड इंटरनेट का मतलब क्या है? देखो मैं आपको इनबाउंड इंटरनेट पहले समझा दूं, राइट। देखो आपके पास कोई EC2 इंस्टेंस है या तो कोई वर्चुअल मशीन है, ओके। उस वर्चुअल मशीन को इंटरनेट से, ये है इंटरनेट, ओके, और इंटरनेट के थ्रू कोई एक्सेस करेगा, दिस इज नोन एज इनबाउंड इंटरनेट। ओके, ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इनबाउंड इंटरनेट। ओके, तो पहली चीज होती है वो होती है इनबाउंड इंटरनेट, यानी कि बाहर से कोई आपके सर्वर को एक्सेस करे। ये AWS में भी लागू पड़ता है और ये तीनों में, लाइक AWS, एज्योर और गूगल क्लाउड, तीनों में इनबाउंड। ओके, अब इनबाउंड एक्सेस के लिए आपको सबसे पहली चीज याद रखनी है कि पब्लिक आईपी चाहिए। ओके, क्या चाहिए? पब्लिक आईपी। अगर आपके EC2 इंस्टेंस के पास पब्लिक आईपी नहीं है तो इनबाउंड इंटरनेट होगा नहीं। AWS में पब्लिक आईपी भी चाहिए और IG भी चाहिए, यानी कि इंटरनेट गेटवे भी चाहिए। AWS और एज्योर में नहीं चाहिए। ओके, दैट इज अ सिंपल थिंग। ओके, अब दूसरी बात, ये इनबाउंड इंटरनेट था। ओके, अगर मुझे इन अपने कंप्यूटर में से, जैसे गूगल, फेसबुक, जीमेल वगैरह खोलना है, राइट, मुझे इंटरनेट में रिक्वेस्ट भेजना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आउटबाउंड इंटरनेट, राइट। उसको हम बोलते हैं आउटबाउंड इंटरनेट। ओके, यानी कि मेरे कंप्यूटर में से मैं गूगल, फेसबुक, जीमेल वगैरह ओपन कर रहा हूं, और ये बहुत ही जरूरी है। ओके, ये बहुत ही जरूरी है। बहुत ही जरूरी क्यों है? क्योंकि लेट्स से दैट इन योर कंप्यूटर इफ यू डोंट हैव आउटबाउंड इंटरनेट यू कैन नॉट एबल टू अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम, you cannot update your antivirus software, even you cannot install any software as well, because most of the software we are downloading from the internet, binaries, right? So it will not allow me. So internet requirement is inbound and outbound. Now for some reason inbound internet is required, for some reason inbound internet is not required. Okay, but in most of the cases outbound is required. Okay, in most cases outbound is required. For some reason inbound is not compulsory, but in most of the cases outbound is always compulsory. नाउ मैं थोड़ा आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा, आपको पता चलेगा। ये कॉमन चीजें है जो क्लाउड में अप्लाई होता है। इट कैन बी फॉर AWS, एज्योर एंड गूगल क्लाउड। ओके, तीनों के लिए अप्लाई होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देख, अगर आपके पास अपनी कोई वेब एप्लीकेशन है, हाँ, वेब एप्लीकेशन है आपकी, उस वेब एप्लीकेशन को, उस पर्टिकुलर वेब एप्लीकेशन को चलाने के लिए आपको चाहिए वेब सर्वर,
चाहिए कि नहीं? राइट, वेब सर्वर होना चाहिए। अब वेब सर्वर जो है, जो जैसे कि अगर ये आपका वेब सर्वर है, राइट, तो वेब सर्वर को इनबाउंड देना जरूरी है, और वेब सर्वर को हम पब्लिक आईपी भी देते हैं। क्यों? क्योंकि तो ही कोई ओपन कर पाएगा वेबसाइट को, इट इज मस्ट। तो वेब सर्वर जो है उसके लिए इनबाउंड जरूरी है, और वो हम देते भी है, पब्लिक आईपी भी देते हैं और इनबाउंड एक्सेस भी देते हैं, और इनबाउंड के साथ आउटबाउंड होता ही है, तो ये यहां पे काम करेगा। अब क्या है, आपके एप्लीकेशन में वेब सर्वर भी है और डेटाबेस सर्वर भी है। ओके, यू हैव वेब सर्वर एंड डेटाबेस सर्वर। तो यहां पे आपका ये डेटाबेस सर्वर है। ओके, यहां पे आपका डेटाबेस सर्वर है। अब इस डेटाबेस सर्वर को कोई बाहर से एक्सेस करे, ये हमारी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ओके, पब्लिक क्या ओपन करेगा? पीपल इज गोइंग टू ओपन web server, and then web server will send the data to the database server. It means if it is a database server, okay, ये सर्वर को you do not need to expose into the internet. Okay, you do not need to expose this into the internet. इसको इंटरनेट इनबाउंड तो देना ही नहीं है। ओके, देखिए, जब आप एक पब्लिक आईपी देते हो ना एक EC2 इंस्टेंस को, राइट, या तो किसी भी वर्चुअल मशीन को इन क्लाउड, जैसे ही आप पब्लिक आईपी देते हो ना, कई सारे अटैक ऑटोमेटिकली चालू हो जाते हैं, बोट ऑटोमेटिकली अटैच कर देता है। तो कभी भी अगर जरूरत नहीं है तो इनबाउंड इंटरनेट देना ही नहीं है। तो यहां पे अगर हम इस वेब सर्वर की बात करें तो इसको इनबाउंड जरूरी है, पर डेटाबेस सर्वर को इनबाउंड जरूरी नहीं है, आउटबाउंड देना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर आप आउटबाउंड नहीं दोगे तो क्या होगा? आउटबाउंड नहीं दोगे तो प्रॉब्लम ये होगा कि इसमें आप अपडेट नहीं कर पाओगे, ना तो आप डेटाबेस इंजन को अपडेट कर पाओगे, ना तो आप डेटाबेस सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम को अपडेट कर पाओगे, ना तो आप एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को अपडेट कर पाओगे, इंटरनेट है ही नहीं। तो आउटबाउंड इंटरनेट देना है, इनबाउंड इंटरनेट नहीं देना है। ओके, तो ये हम कैसे करेंगे? ओके, ये हम कैसे करेंगे? सबसे पहले मेरे पास एक सर्वर तो इनबाउंड वाला है, एक सर्वर मुझे इन डेटाबेस सर्वर, जैसे अभी मेरे पास वेब सर्वर है, गिन लो कि अभी मेरे पास वेब सर्वर तो है, राइट। अभी हमें क्या बनाना है? डेटाबेस सर्वर। ओके, अभी हमें बनाना है डेटाबेस सर्वर, और ये जो डेटाबेस सर्वर है, राइट, उसको हमें देना है आउटबाउंड। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट होता है कि कैसे ये तीनों काम करते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल AWS में इंटरनेट गेटवे वाली चीज है, एज्योर में ये पूरा अलग वे से काम करता है, और गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में भी अलग वे से काम करता है। पहले हमें AWS का इंटरनेट जो है इनबाउंड बंद है, उसको भी स्टार्ट करना पड़ेगा, बट द प्रॉब्लम इज अगेन our time is over. Okay, so no need to worry about this. Our session will be continue for the next as well. This will be the final and last Friday. Next Friday again we are going to meet, and then we will discuss ये जो जितने वर्चुअल मशीन EC2 इंस्टेंस सब है वो मैं रेडी करके रहूंगा, चालू रखूंगा, जिससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम हम सीधा कॉन्सेप्ट समझेंगे, how I can provide inbound and outbound access। और इस बार यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज वाली जो चीज है वो है Azure VNet। हाँ, मैं वो आपका प्रॉब्लम लाइफ टाइम के लिए सोल्व कर दूंगा कि Azure VNet में कैसे काम करता है। वो बहुत ही कंफ्यूजिंग थोड़ा सा पार्ट है वहां पे, पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तीनों में इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरनेट डिस्कस करेंगे ड्यूरिंग द नेक्स्ट क्लास। ओके, अभी के लिए वी आर गोइंग टू क्लोज दिस। थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट ICA क्लास। एवरी फ्राइडे हमारे कम्युनिटी मेंबर के लिए ये क्लासेस होते हैं।
अगर आपको कुछ भी सीखना है कमेंट में या मैसेज कर दो मुझे, हम उसको भी इंक्लूड कर देंगे. ओके, राइट नाउ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दिस. थैंक यू वेरी मच. सी यू. गुड बाय. थैंक यू एवरीवन. गुड बाय.